Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdullah Altaf. My partners are Musa bin Abdullah and Danial Mujahid. My roll number is 2335558. Musa's roll number is 2333576 and Danial's is 2335588. Okay, so our project is based on a management system. It is basically an inventory management system. So basically सीन ये होता है कि जब भी आप कोई ऐप या वेब बिल्ड करते हैं, यूजर बेस्ड होती है, चाहे आप एडमिन हो या चाहे आप यूजर भी हो। तो सबसे पहले आप ना एक लॉगिन पेज बिल्ड करते हैं। तो लॉगिन पेज की दो ऑप्शंस होती हैं। या तो आप लॉगिन कर लें अगर आपका एग्जिस्ट करता है अकाउंट, या फिर आप रजिस्टर कर लें या साइन अप कर लें, वट। तो सबसे पहले हम जब रन करते हैं तो हमारे पास एक लॉगिन पेज आता है। अब सपोज करते हैं कि हमने अकाउंट नहीं बनाया हुआ इस आईएमएस पे, तो हम एक रजिस्टर कर लेते हैं, हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। तो हम जाएंगे रजिस्टर पे और यूजर नेम लिखेंगे काशिफ, KASHIF, और पासवर्ड रखेंगे ABC। और कंफर्म पासवर्ड में दोबारा जाके ABC, और इसको हम कर देंगे रजिस्टर। और ये हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। और इसके हम डेटाबेस में भी देख सकते हैं कि हमारा ये सेव हो गया होगा। अगर हम डेटाबेस में जाएं और हम उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम, ये सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको अगर यहाँ पे करें एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद देख सकते हैं कि जो एडमिन और बाकी जितने भी यानी कि यूजर्स ने अपने इस पे अकाउंट बना लिए हैं वो आए हुए हैं पहले से ही। देखिए आप देख सकते हैं दानी का बना हुआ है, और भी दानियाल अब्दुल्ला बहुत सारे बने हुए हैं। तो एंड पे काशिफ आ गया है जिसका पासवर्ड ABC हमने रखा था और वो स्टाफ का मेंबर है। ये हमारे पास एक और यूजर जनरेट हो चुका है। तो अब हमने एज ए एडमिन उसमें लॉग इन करना है, हमारे पास उसका पासवर्ड है। तो आई गेस जो एडमिन है, मैं एडमिन वाले पेज पे एडमिन का यूजर नेम डालूंगा सबसे पहले। ये मैं यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, यूजर नेम दानी, और पासवर्ड भी दानी है। हम अब लॉग इन कर लेते हैं। तो हमारा लॉगिंग सक्सेसफुल हो गया, ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। सो नेक्स्ट पेज is the main page of our inventory management system. Left side where you can see the dashboard is has many options. On the right side of the page, the better half of the page, we can see the customer management, sales, audit logs. मैं इनमें से customer management, sales और audit log को present करूंगा। So सबसे पहले हम customer management में जाएंगे। तो कस्टमर मैनेजमेंट पे हमने क्लिक कर दिया तो वी कैन सी कि हमारे पास नेम, एड्रेस और सिटी है। हमारे पास एक नेम आ रहा है, मूसा है नंबर 2 पे, उसका एड्रेस है और उसकी स्ट्रीट 15 है। उसका सिटी मुल्तान है। उसकी जब हम क्रिएट किया था वो तब आ रहा था, जब अपडेट किया तब आ रहा था। हम इसमें ना एक क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम नेम एंटर करेंगे, कोई सा भी हम नेम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे वेरी वेरी रैंडम हम अब्दुल्ला एंटर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एड्रेस ABC एड्रेस एंटर कर लेते हैं, कोई सा भी एड्रेस हो सकता है। या ADC 1 2 3 वट एवर स्ट्रीट। ओके, अब हम सिटी मुल्तान एंटर कर लेते हैं। अब हम करेंगे, अच्छा हमारे पास ना तीन ऑप्शन, आपको तीन बटन की नजर आ रही हैं, ऐड कस्टमर, अपडेट कस्टमर एंड डिलीट कस्टमर। हम पहले ना इस कस्टमर को ऐड कर लेते हैं। तो अब ये हमारा बैकएंड की डेटाबेस पे सेव होके यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा देगा। हम ओके के बटन को क्लिक करेंगे, कस्टमर ऐड हो गया है, उसका नेम अब्दुल्ला, एड्रेस फलाना फलाना एंड सिटी मुल्तान। वेरी वेरी रैंडमली हमने इसको बहुत इजीली ऐड कर लिए जो बैकएंड पे सेव हो रहे डेटाबेस के अंदर। अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं। हमने इसी यूजर को अपडेट करने सोचे, हमने इसका ना सिटी चेंज करना है। तो अब मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं वैसे मुल्तान में। तो अब सोचिए मैंने अपनी सिटी चेंज कर ली है, मैं शिफ्ट हो गया हूँ लाहौर में। तो अब मैं यहाँ पे लाहौर लिखूंगा, और उसके बाद मैं अपडेट के बटन पे सिंपली क्लिक कर दूंगा तो अब अपडेट हो जाएगा और मेरा सिटी आप देख सकते हैं चेंज होके वापस लाहौर हो गया। ओके, हमारे पास फाइनल बटन इज द डिलीट कस्टमर बटन। अगर हमने इस कस्टमर बटन को, हमने कस्टमर को ही डिलीट करना है अच्छी तरह, लेकिन अभी ये कस्टमर इज नॉट द कस्टमर ऑफ IMS एनीमोर। तो अब आपने इस कस्टमर को यहाँ से हटाना है, तो सिंपली हम डिलीट, कस्टमर का नेम लिखा हुआ है, एड्रेस सिटी लिखा हुआ है, हम जस्ट डिलीट के बटन को सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले कस्टमर को, और उसके बाद डिलीट को क्लिक कर देंगे एंड सिंपली हमारा वाला डिलीट हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये थोड़ी सी जरा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है, गलत क्लिक हो गया था। मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ।
एडिटिंग। ओके, सो सिंस हमारा अब कस्टमर मैनेजमेंट प्रेजेंट हो गया है, तो अब हम आगे सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। आई विल बी आल्सो बी प्रेजेंटिंग सेल्स इन फ्रंट ऑफ यू। मैं इसको फुल स्क्रीन करूंगा ताकि आपको भी विजिबल हो और मेरे लिए भी विजिबल हो। सो आई होप ये विजिबल होगा। ओके, हमारे पास सेल्स के अंदर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कस्टमर सेल्स राइट साइड पर। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डैन, मूसा एंड अब्दुल्ला का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं मूसा को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं मूसा के टोटल प्रोडक्ट्स जो उसने सेल किए मैं वो चेक कर सकता हूँ। ठीक है। मैं पहले इस बटन पे क्लिक करूंगा तो नीचे हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और मेन स्क्रीन के बिल्कुल बीच में हमारे पास लैपटॉप जो उसने 22 सेल किए हैं उनमें से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द फोन्स एंड द टोटल फोन सॉल्ड, ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि डेटाबेस में पीछे बैकएंड पे सेव हुआ है। सिमिलरली हमारे पास कस्टमर सेल्स का बटन एक नजर आता है बिल्कुल साथ पे। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कस्टमर सेल्स जो टोटल सेल्स हुई हैं वो 5 लैपटॉप्स एंड 6 फोन्स की हुई है, जिनमें 6,000 टोटल रेवेन्यू लैपटॉप से एंड 4,800 टोटल रेवेन्यू फोन से जनरेट हुआ है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपकी डेटाबेस के अंदर बैकएंड पे सेव होती रहती हैं और अपडेट होती रहती हैं। जब भी मैं किसी चीज को अपडेट करूंगा, चेंज करूंगा, सेल्स करूंगा, प्रोडक्ट्स को ऐड करूंगा, डिलीट करूंगा, तो वो हर चीज की डेटाबेस एक अलग बनी हुई है जो पीछे सेव होती रहेगी। अच्छा, मैं थर्ड मॉड्यूल को अब एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से इसको बैक पे जाऊंगा और मैं ऑडिट लॉग्स के अंदर जाता हूँ। ऑडिट लॉग्स में जब मैं क्लिक करूंगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा क्यूरी, और उसके बाद वो कहेगा क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद अभी ऑडिट लॉग कोई नहीं हुआ, यानी कोई ऑडिट नहीं आया। जब ऑडिट नहीं आया होता तो वो एम्प्टी होगा, वरना वो बैकएंड के अंदर सेव करता रहेगा। सो यहाँ पे ऑडिट लॉग में ऑप्शन थी लॉग इन आईडी, यूजर आईडी, एक्शन एंड अदर ऑप्शंस लाइक डिस्क्रिप्शन, टेबल अफेक्टेड, एक्शन टाइम, और ऊपर सर्च का ऑप्शन था। अब मैं यहाँ से वापस बैक जाऊंगा क्योंकि हमारे पास फिलहाल कोई ऑडिट नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद दानियाल, रोल नंबर 233588। आई विल रिप्रेजेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इनवॉइस मैनेजमेंट, हेल्प एंड सपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्लिक करूंगा। इधर मेरे पास आई हैव प्रोडक्ट नेम, SKU, कैटेगरीज, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड बार कोड। एज यू कैन सी, पहले से ही मैंने कुछ इंसर्ट किए हुए हैं इसके अंदर, जो डेटाबेस के अंदर इंसर्टेड हैं। तो हम एक और ऐड कर लेते हैं, लाइक मोबाइल, उसका SKU MOB 22। SKU बेसिकली एक यूनिक होता है। और उसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद क्वांटिटी 12, यूनिट प्राइस 1200, बार कोड आई विल जनरेट, like now I will add product. The product is added successfully. As you can see, the product is added and it is directly saved back into the database. Then I will, if I wanted to update a product, then I only click on the product I wanted to update, and from here on I can change the product. Let me change the SKU, for example, MOB 23. Now I will click on the update product, it will update. The SKU will become the MOB 23. If you wanted to delete a product, let me add another random product firstly, then we'll delete that product. Mobile mob 26, quantity 11, unit price 120. It is only for sample. I have to delete it, so it is rubbish. उसके बाद आ जाता है, I will add first, then I will delete it. As you can see, it is deleted successfully. Now I will move on to my next part. Now we have invoice management. In invoice management, you can select customer to whom you wanted to sell your product. Like I will select Abdullah. I will select the product which I want to give. I will select laptop and mobile.
As you can see, it is invoice number 5. Yani, there are four more invoices that are being executed and saved in the database. It is invoice number 5. Now, as you can see, I have available quantity. Now I will select from the available quantity 12 and here 5. Now I will generate its invoice. After invoice generation, you will see the total price, which is $20,400. Now I will print invoice. It will print successfully, and invoice is generated. Now we'll move to the help and support. Yeah, as you can see, help and support. It is frequent asked questions, contact supports, system requirements, and software updates, and other things that you will need, and we can assist you. No, as you can see, Abdullah ने जैसे आपको पहले बताया था sales. I will repeat that Abdullah. In Abdullah, you can see the customer sale that we have sold to the my customer Abdullah. I have sold 12 laptops and 5 mobiles to Abdullah, and I have collected a total revenue of 20,400 rupees. No, I will. No, here you can see the total product I sold till now. I have sold 39 laptops, 19 phones, and 5 mobiles, which make a total revenue of grossing $68,000. So here you can see the sales and the sales window. You can see the sales customer, individual customer wise, or the total product that you have sale in the sales window. The next three report, supply, and category will be explained by the Musa. Carry on to the Musa. Thank you from my side. Assalamu alaikum. My name is Musa bin Abdullah. I am presenting the three slides that have been assigned to me. It's about reports, suppliers, and categories. Our group is 9, and I have team members Daniel and Abdullah. My roll number is 2333576. So first, I'm going to start with categories. If we talk about categories, the category is about the information about the category, what type of category. There are three types of categories that are being explained here. It is electronics, mobile glass, and mobile covers. So if there are three options that I have given here. That is category name, description, and you could see is active. Now, if we write a category name, we write a category name. So we're gonna write something like mobile speaker. MOBILESPAKERS. And description is about like it's for enhancing the voice. For the voice. And is active. So basically there I have given the category name, description, and is active. That way I could add the category. Now I'm gonna click the button add category, and the category is going to be added successfully. And we can also update the category like the same way. You could see in the database that it has been updated like that, and all the even the time is given that the at which time it was created. And is active, I have clicked active, that's why it's a tick here. So I have these kind of things. I could also update it and delete the category. So now I'm going to open something else. I'm going to close the categories, and I'm going to show you the product management. Basically these are all connected. So in product management you could see that there is a category ID. So ID 7 was assigned to electronics, and here in categories there are four because I have added one mobile speaker. I'm gonna go back to the categories now. Cross. So here I could also update category and delete category. I could update the category like mobile electronics, and I could remove the S from electronics, and you and update the category.
At the same time, I have updated the category and now it's electronic, not electronics. So I just added the mobile speaker here. I could delete it also. I'll first click on the mobile speaker and then I'm gonna click on the delete category. That way I could delete a category. It will also ask, are you sure about deleting a category because it is a very important thing about the administration. Yes, I'm gonna press the button yes. Category deleted successfully. So one part of the category has been completed. I'm gonna move to the next, that is suppliers. Suppliers are basically the people who provide the supplies to the storage. We are making an inventory management system. So basically, management system is a storage place where we are storing things. So we buy things from the suppliers. Here there is a we could see there is a supplier name, name, and phone and email. And for a dummy, I have also put something inside the database as suppliers ID 1, suppliers name Tech Distributor Incorporation, contact name Musa, phone etc. 123 to 90, email supplier at the rate example, and address. I could also add another supplier, update and delete the supplier. For example, I will add a supplier like Kashif. Contact name, I'm gonna write Daniel. The and phone number is going to be something like 901234, and email is going to be like kashif at the rate of .com. Shif at the rate. And then I'm gonna confirm it. The address, I'm gonna write the email address here. I could write anything like um, Wakastown. I'm gonna add the supplier by clicking on the add button, and supplier has been added successfully. Okay, now you could see in the database that supplier ID is assigned automatically to, and then the name and the contact name, phone, email, and address. I could also update the supplier. There's a technical issue. Yeah, I'm gonna update the supplier by changing the contact name. Now here I'm gonna write contact name. Here I'm gonna write Ali by, and I'm gonna update the supplier. Okay, successfully updated. The contact name is been updated to Ali. And now the last button that I have to explain it to you about the supplier, that delete supplier. I'm gonna select the supplier, the Kashif Ali that I just created. And now I'm gonna press the button delete. Yes, this is just a confirmation and supplier deleted successfully. Okay, so supplier has been explained to you very briefly. We're gonna move to the next button. The next button is about the report. So basically, the report is given for the all the transactions over which are happening. We can generate a product report, generate a sales report. Since there is no such thing where that we have followed in a path, so I'm not explaining that to you in that way because this is blank. So there is nothing inside it. And thank you for listening to us, ma'am. You have given us a precious time to listen to us. I've explained all the types that were given to me. Thank you for understanding and listening to us. Jazakallah.